बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी, तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी, युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी, युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी, अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है, नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है, स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है, स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है, बिछड़ी हुई हर आत्माओं को शिव से हम मिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे।
Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. And Om Shanti. Good morning. Good morning. आज बाबा की साकार मुरली 13 दिसंबर की सुनेंगे. Let's listen to Baba's Sakar Murli, that is 13th December. कि तुम क्या कार्य करते हो? What is your task? बिन बताते हैं. Of course, Baba explains गॉडली मिशन. various ways. आप क्या करते हैं गॉडली मिशन में? In today's Murli, Baba says, what do you do in godly mission? Just like Christians have a mission of converting the others into Christians. So in the same way, what's your mission? That is to make others belong to God and to become God's child, so that that soul also can receive the inheritance of peace and happiness. Becoming a God's child. So if you make anyone belong to God, and if that soul becomes God's child, that soul becomes a part of God's family. And Baba just advises us to have a constant check. Baba just asks us to check the report or the stage of our sense organs, that is the eyes, ears, mouth. Is there any mischief in your sense organs? So today Baba tells us to check. When will you be able to have that perfect control over your organs? That is, when you are in the constant remembrance of the Father, you will receive that power to rule your sense organs. The essence, sweet children, this is your godly mission. You have to make everyone belong to God and enable them to receive their unlimited inheritance. So, sweet children, this is your godly mission, and you have to make everyone belong to God and enable them receive their unlimited inheritance. Question: when will the mischief caused by your sense organs finish? Answer: the mischief of your sense organs will finish when you souls reach the stage of the silver age, that is, when your souls reach your sato stage. त्रेता की सत्तो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी. अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है. It's now your return journey, and so you have to keep your sense organs under control. वश में रखना है. विशेष बाबा ने अटेंशन दिलाया. Baba has drawn our attention. पाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा. Don't secretly perform any act through which you souls would become impure. अविनाशी सर्जन तुम्हें. Continue to follow the precautions that the imperishable surgeon gives you. आज की मुरली का गीत है Song: मुखड़ा दे. look at your face in the mirror of your heart, O man. ओम शांति. Om Shanti. रूहानी बच्चों के प्रति The spiritual father explains to you, spiritual children. समझा रहे हैं. ना सिर्फ He doesn't explain to you, only children sitting here. जो भी रूहानी बच्चे All of you spiritual, mouth-born children of Prajapita Brahma know that वो जानते हैं. the Father explains to you, Brahmins. हम ब्राह्मणों को बाप समझाते हैं. Previously you were Shudras,
पहले तो and तुम भी you have शूद्र now थे, become Brahmins, फिर आकर क्या बने हैं? ब्राह्मण बने हैं। पहले तो क्या लाइफ थी? what क्या was your जीवन थे? life क्या before संगत, adopting क्या the path of संकल्प थे? knowledge? What were your क्या thoughts? करते What थे? was your अभी तो company पहले and तो what were तुम you शूद्र doing? थे, So Baba फिर tells you were आकर Shudras ब्राह्मण बने हो। and you have now become Brahmins. बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। The father has explained to you the account of दुनिया में different वर्णों clans. को भी नहीं समझते, The world doesn't even understand about these सिर्फ clans. गायन है। There is only the praise अभी of तुम them. ब्राह्मण वर्ण के You हो, are now part of the Brahmin clan. उसके You will बाद then become क्या part of किस the वर्ण deity में clan. जाएंगे हम? देवता वर्ण के बनेंगे। तो शूद्र थे, अभी We were ब्राह्मण हुए, Shudras, फिर देवता बने। then we became Brahmins. विचार We करो, will become deities. ये बात राइट है? So just think about whether these Judge aspects are right. yourself. Judge for yourselves. हमारी बात सुनो, Listen to me and then compare. शास्त्र Compare तो the जन्म scriptures which you जन्मांतर have been से listening to for birth after birth और जो ज्ञान with का what the सागर Father, आप the समझाते ocean of हैं, knowledge, says. उनकी भेंट करो। राइट क्या Judge है? what's right. ब्राह्मण धर्म अथवा कुल You have completely बिल्कुल forgotten the भूल गए। Brahman religion and clan. तुम्हारे पास The विराट variety रूप form का image एक is created राइट accurately. बना हुआ है। You इस can पर explain समझा using that सकते हैं। image. बाकी इतनी भुजाएं वाली However, चीजें all जो the बनाई pictures with गई so many arms और which have been देवियों को created हथियार and the images of बैठने goddesses holding weapons, होते थे, etc., are वो wrong. सब रॉन्ग है। वो भक्ति मार्ग Those के चित्र pictures belong to the path of devotion. इन आंखों से They सब see देखते everything with their हैं, eyes and परंतु yet they don't समझते understand. नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का ही पता नहीं। They don't even know about anyone's occupation. अब तुम बच्चों को You children क्या now, क्या समझ आई है? हम बच्चों को पहला बाबा ने क्या बताया? what understanding have you शूद्र children थे, received? So अब Baba ब्राह्मण explained बने that हैं, फिर we देवता were बने हैं। Shudras, दूसरा then बाबा we क्या became बता रहे हैं? Brahmins, then we are becoming deities. Another अब aspect समझ which is पड़ा है। taken by Baba is that it is at this time that किसके you बारे children में? know about what? आत्मा के बारे में। About the soul, सबसे बढ़िया चीज the most क्या है? अपने को जानना। wonderful आत्मा का पता पड़ा है। thing. The knowledge is knowing the और self. तीसरी बात क्या पता पड़ी है? And the third thing, 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा। so we now understood that जैसे the बाप soul बच्चों goes को through the cycle of समझाते, 84 births. तुमको फिर औरों को Just समझाना like the है। Father is explaining to you, so you then शिव have to बाबा तो explain to सबके पास others, नहीं जाएंगे। because Shiv Baba will not go to everyone. जरूर बाप के मदद The Father मांगते definitely हैं। needs helpers. इसलिए Therefore, आज बाबा ने क्या कहा? what did Baba इसलिए say in तुम today's कौन Murli? से मिशन में हो? That's why Baba बोलिए, reminded us that you are, ईश्वरीय this मिशन। is your godly mission. कितना बड़ा काम बाबा ने So दिया Baba है। has given us such a सब huge आत्माओं को responsibility of भगवान का making all the souls belong to God. क्योंकि माया बना के बैठी है। Because अब Maya उसे has made them छुड़वाना belong to मेहनत herself. का काम है। So in order to इसलिए make बाबा ने them कहा तुम्हारा काम belong to है God, of course this requires a lot आत्माओं of को effort. भगवान का बनाना। तुम ईश्वरीय मिशन पर हो। So Baba says this is your तुम godly सबको mission, you make ईश्वर everyone का belong to बनाते God. हो। समझाते हो You explain that वो हम He is the आत्माओं unlimited का Father of बेहद all का बाप of है। us souls. उनसे We बेहद का receive the प्रसाद unlimited होता है। inheritance from Him. जैसे लौकिक Just बाप को as याद you किया remember जाता your है, worldly fathers, in the same way, उससे भी जास्ती you have to remember the Father from beyond this world even more. याद करना पड़े। Physical fathers give you temporary happiness, whereas कुछ मकान मिल गया, we प्रॉपर्टी receive the property, we received some share, we receive vehicles. So everything is of temporary happiness, whereas what does unlimited Father give you?
So the unlimited Father gives you unlimited ये भी happiness. आत्माओं All को souls ज्ञान now देता है। receive this knowledge. अब तुम जानते हो You now know that there हमारे are कितने 3 पाप हैं? fathers. बाबा हमेशा याद दिलाते हैं। Baba बोलना just नहीं, always कितने reminds पाप us, हैं? how many fathers do we 3 have? हैं। 3 बाप Baba says you have 3 कौन से? fathers. Who are they? लौकिक, Laukik Father and the Alaukik Father and the Paralaukik. बेहद का बाप The unlimited Father is explaining to you through the Alaukik Father. इस बाप No one knows this Father. किस बाप को? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता भी नहीं है। No one knows the biography of कृष्ण को भी जानना चाहिए। Brahma. His occupation too has to be known. कृष्ण की महिमा तो गाते They हैं। sing the praise of Shiva and Sri Krishna, but what about the praise of Brahma? निराकार बाप को मुख तो चाहिए। The incorporeal Father definitely needs a mouth for what? Through which nectar can be given. ब्रह्मा बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए भक्ति मार्ग में They can't remember the Father accurately on the path of devotion. याद नहीं कर सकते। अभी तुम जानते Now हो you know and understand that this is Shiv Baba's chariot. ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। रथ को भी श्रृंगार Chariots are decorated. जैसे The horse of the Hussein is also decorated. तुम बच्चे You children explain to human beings so well. मनुष्यों को समझाते हैं। तुम सभी You praise everyone. तुम ही तो बोलते हो सबको You tell everyone. कि तुम देवता You tell them we were those deities. Then after taking 84 births, we have become Tamo Pradhan. प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बने। If you want to become Sato Pradhan now, उसके you लिए need क्या to चाहिए? have yoga. हाँ, बाबा कहते आप समझाओ सभी Baba को। says, you just explain everyone. You were deities, you were so elevated. फिर क्या हो गया आत्मा What के did अंदर? you become then? एकदम The विकार alloy negativity of आ these गई, vices दुख आ गया। and the अब negativity फिर सत्व प्रधान बनना got है, mixed सुखी बनना है। into the soul, इसके लिए and क्या now चाहिए? you wish to lead a very happy and peaceful life. Then what is required for that? You need to have yoga बड़ा with the Father. मुश्किल कोई समझते हैं। However, hardly यदि anyone समझ understands this. जाएं, उसकी निशानी क्या बताई If होगी they बाबा were to ने? understand this, their mercury समझ of जाए happiness ये would योग, rise. जिससे प्रकंपन मिलते हैं बाबा से, तो The vibrations बाबा that ने we कहा, receive, उसको खुशी का पारा चढ़े। आप सभी खुश हो? so all of you are happy. वही बाबा ने कहा जिसका योग है बाबा से, Those who have yoga with the Father, they receive those किस चीज़ से? vibration, खुशी की। those वही happiness. बाबा बता रहे हैं। यदि समझ गए तो नहीं If one समझेंगे तो realizes बुद्धि that भटकती है तो नहीं मिलती। if one's intellect just wanders here, then one will मुश्किल not receive the समझते हैं। power. समझ गए तो If खुशी you का understood, पारा you will be happy. समझाने वाले का The mercury of the happiness of the one who is explaining would rise even more. बाप का To give the introduction of the unlimited Father is not a small thing. कम बात है क्या? समझ तो नहीं सकते। They don't कहते हैं, understand. कैसे हो सकता है? They ask, how is this possible? बेहद के बाप की You जीवन relate the life story of the unlimited Father. अब बाबा कहते The Father says, हैं, children, बाबा ने कहा what did Baba कि say? तुम आत्मा हो। Baba इसका said, पता चला। you realized and you got the knowledge that you are souls. बच्चे Now the Father says, children, become pure. तुम पुकारते थे, You used to call out, O purifier, come. हे पतित पावन। The word Man Manabhav is also mentioned in the दुख Gita था ना हर एक के जीवन में। because everyone had one or another kind शांति के लिए पुकारते of थे। sorrow. That's why every soul called out to the Father. गीता में मन मना भव अक्षर है।
So the term Manmanabhav is also mentioned in the Gita, but no one understands the meaning of it. बाप आत्मा The का Father ज्ञान explains भी the knowledge of soul so क्लियर clearly. करके समझाते हैं। हाँ, दुनिया में है ही नहीं ये ज्ञान, This नॉलेज ही knowledge नहीं है doesn't आत्मा क्या exist है। in the भगवान world. कितना क्लियर करके What is समझाते a हैं। soul? कोई शास्त्र में ये बातें None है of these aspects are mentioned in any of the बाबा जी का scriptures, भल कहते तो हैं, although आत्मा it बिंदी is said that a soul is a point, प्रकृति a के star बीच sparkling in the स्टार center of है, the forehead. परंतु This is not clear in anyone's यथार्थ intellect. रीति किसी के बुद्धि में नहीं है। हाँ, हम सब यही कहते थे ना भक्ति में, स्टार है We आत्मा। all were लेकिन मालूम नहीं telling था on the बस। path of devotion that the soul is a वो star, भी but जानना पड़े ना। without even knowing. कलयुग में तो है But we have been given this knowledge now, and this aspect too has to be known. In the Iron Age, everyone is unrighteous. In the Golden Age, everyone is righteous. People on the path of devotion believe that all of those are ways to meet God. ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। कितनी भक्ति है ना सारी How दुनिया में। much people कितना भटक रहे worship हैं लोग। the सोचते people हैं of the भगवान world को मिलेंगे। are just इसलिए wandering तो तुम फॉर्म in the भरवाते search हो। of God. तो फॉर्म में प्रश्न That's why you होते हैं ask them to ना, fill the यहाँ form. तुम क्यों आए हो? So you also have this उसको question, बताना पड़े भी क्या है तुम्हारा लक्ष्य। why have you come इससे भी here and तुमको what's बेटे the बाप का purpose of परिचय visiting this place? So we have some questionnaire. पूछते हो So, आत्मा का बाप कौन है? so you have to give the introduction of the unlimited Father in this way. You ask them, who is the Father of all the souls? If you say that He is omnipresent, it makes no sense. The most important thing is that who is the Father of all. You can also explain to all the members of your households. It's very necessary to have. सबके घरों में चित्र हैं? Do you have pictures हाथ खड़ा करें जिनके घरों में है। in your home? Can you raise your hands? अपने घर में That's why Baba said, which pictures do you have? The first one. मुख्य चित्र रखो। So Baba says it's necessary to have one or two important pictures, like the tree, त्रिमूर्ति the ladder, और तीसरा and the क्या बताया होगा? Trimurti. झाड़, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत जरूरी है। झाड़ से सब The people धर्म of वाले other समझते religions can understand from the picture of the हैं कि tree हमारा धर्म when कब शुरू हुआ। when their religions were established. हम On this आप basis, इस हिसाब we से can go स्वर्ग to में heaven. जा सकते हैं। जो आते पीछे Those हैं, who come वो तो later स्वर्ग में on नहीं can't go to heaven, हाँ, शांति धाम में but जा will go to सकते the land of peace. हैं। झाड़ में A बहुत lot clear can be clarified with the जो picture of the देवता कुल tree. का होगा उसको तो पता होगा ना कि अभी हम The जा soul सकते हैं स्वर्ग which में। belongs to the deity नहीं clan can होगा, easily बुद्ध धर्म understand का होगा उसको पता चल जाएगा that मैं तो he is स्वर्ग में नहीं going to जाऊंगा, that clan. If लेकिन that soul is from शांति the धाम में तो जाऊंगा। Buddhist, झाड़ का पिक्चर बहुत अच्छा है, if चक्कर का that भी soul बहुत is a अच्छा है। Buddhist and that बाबा soul, ने कहा सब धर्म वाले even समझते if you explain that soul can't go to कि the deity हमारा clan. धर्म कब शुरू हुआ, So Baba says, हम when did इस our हिसाब से religion स्वर्ग start? में जा सकते हैं। जो आते पीछे हैं The souls वो तो of फिर those स्वर्ग other में नहीं जा religions that emerge later on will definitely go up सकते। बाकी above and शांति remain धाम there. यहाँ जा सकते हैं। झाड़ से बहुत क्लियर है। So Baba says जो the entire जो foundation धर्म is in पीछे your आए, intellects. उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाएंगी और विराजमान हो जाएंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। The Father says, the sapling of the original आदि सनातन eternal देवी deity देवता religion धर्म has का been planted, सैपलिंग तो लगा, but you also have to create the leaves. पत्ते भी तुमको Without the बनाने हैं। leaves, there is no ये tree. अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। Baba just speaks about this wonderful aspect. So we now understand that we belong to the deity clan, but we at the same time we have to give Father's introduction.
we have तो to make बाबा their ये characters बता रहे हैं, elevated. चलो तुम्हारी तो बुद्धि में फाउंडेशन लगाया गया So Baba says, of course, you तो have the बाबा foundation कहते and हैं, your foundation is आदि already laid. सनातन देवता धर्म का So सैपलिंग it's तो now लगा, the time to ये give the झाड़ introduction के to पत्ते others. भी तुमको बनाने हैं, पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता ही नहीं, So Baba says a tree doesn't exist इसलिए without बाबा leaves. पुरुषार्थ कराते हैं, That's why Baba inspires us to make आप effort समान to make बनाने others similar to ourselves. और The धर्म people वालों of को other पत्ते religions don't have to create their नहीं lives. बनाने पड़ते। जैसे क्राइस्ट आता है उसके पीछे क्रिश्चियंस आ जाते हैं, When, for instance, when Christ comes, the Christians just follow them. It's not a matter of any तुमको और effort. आत्माओं को बाबा का परिचय Baba देना, says, आत्मा का we ज्ञान make a देना, lot of चाहे effort सृष्टि that चक्र we का give the ज्ञान knowledge देना, of the soul, उनके supreme चरित्र soul, को अच्छा and the बनाना, knowledge तो वही बाबा का of पुरुषार्थ the कराते हैं, beginning, आप middle, and end समान of the world बनाने के लिए। cycle, and we make the और effort धर्म to वालों make the को पत्ते characters बनाने नहीं elevated. पड़ते, वो तो ऊपर So से आ the जाते हैं, people of other religions don't have to make फाउंडेशन effort on any लगाते of these हैं, things. फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं, So they come from up above and they lay the foundation, then the leaves, that is the souls of that respective religion, कई आत्माएं निकलती continue हैं to क्या, come from up above. तो बाबा ने कहा You hold these प्रदर्शनी करते exhibitions हो, in order to make the tree grow. इससे पत्ते लगते हैं, The leaves emerge in this फिर way. क्या होता है, हाँ, कई Then लोग when a आते हैं, storm सात दिन comes, का कोर्स some करते हैं, come फिर क्या होता है, and they take the बाबा 7 ने days कहा, फिर course. आते हैं, तूफान आने से गिर जाते हैं, पत्ते हैं ना अभी, So Baba says when a storm पत्ते जो comes, they हैं, just पहले fall तो वो off. थोड़ा चमकते हैं, अच्छा नशा चढ़ा, You find the tender leaves, those whose intoxication is very high, when they are faced with any kind of situations, विकारों को नहीं जीत सके, if they can't conquer their vices, तो बाबा they ने will कहा, just फिर तूफान आता fall है, off. गिर पड़ते हैं, मुरझा भी जाते हैं, The original eternal deity religion is being established, and such souls get disheartened and they feel that we can't lead a yogi life, we can't continue on this path, we can't conquer, and such souls just shed. ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, So the original eternal deity religion is being established. लेकिन एक बात There है, is no question of कौन सी? fighting in this. क्या करना है, What do we have to do? देवता धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई तो करनी नहीं, We must not indulge in conflicts. We can't compel anyone to become a Brahmin. परिचय देते हैं, आत्मा We का just give the परिचय Father's देते हैं। introduction. We give the लेकिन introduction बाबा of ने the कहा, soul. क्या करना है इसमें, What else you have to do, which is told by the Father? सिर्फ बाप को याद करना, और Baba says the most important thing is just that you have to remember the Father and inspire others to remember इस ज्ञान Him. में खुद को बाबा की याद में रहना है, और So Baba says, first we have to be in the तुम remembrance, then सबको कहते हो, we can inspire जो others. भी रचना You है, have to tell everyone to forget all of the creation because you can't receive your inheritance from the creation. रचयिता बाप को You have to remember the Father alone who is the creator. का इतना याद करना है उसको, So we have to remember Baba so much that इतना बाबा को याद there will not be any margin for us to remember anyone. करना है, बाप का बनकर If after receiving this knowledge and belonging to the Father, you perform any impure तो act, उसका बोझ a huge burden accumulates on your head. बाबा के बने, You have belonged to Baba, you have become a Brahmin, कुछ and you perform such से खराब विचार, impure acts, or की भावना, that is, jealousy, कुछ गलत काम हो जाते हैं, when we start performing the unrighteous actions, सिर we accumulate that burden on our तो heads. पावन बनाने आते हैं, Baba has come to make everyone ऐसा pure. कुछ काम करते हैं, In case if तो और ही you perform such impure acts, you would become even more impure. And that's why Baba says, क्या कहता है don't. बाबा, हाँ, ये What does Baba say? And this is the most करना है, होमवर्क है, क्या कहते हैं बाबा, बाबा कहते हैं most ऐसा important कोई काम one. नहीं Baba करो says, don't perform any act which would create a loss. बाप की The Father would then be dishonored. कर्म नहीं करो, Don't perform any such actions which would increase your account of sin.
परहेज भी रखनी है. Precautions have to be अच्छा taken. उदाहरण दिया बाबा ने. Baba परहेज just भी gives रखो. कौन wonderful सी परहेज? example. What's the precaution? For दवाई में भी instance, परहेज रखिए. while taking medicine, you also have to take precautions. If your doctor says you are not supposed to eat anything sour, you have to listen to him. You have to keep your sense organs under your control. If you eat something secretly, खट्टी चीज नहीं खाओ. अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो the medicine will not have any होगा? effect. दवाई का असर नहीं होगा. तो इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनो तो कर्म इंद्रियों को वश में रखो. यदि Baba says, become pure, have that perfect control over your sense organs. So when you perform wrong actions, बाबा कहते हैं छिपा के खाते रहेंगे तो दवाई का असर भी नहीं होगा. this knowledge cannot be इसको imbibed. कहते हैं, That's क्या called कहते हैं? temptation. डॉक्टर कहता है खट्टी चीज नहीं खाओ और हम छिपा के खा रहे हैं. इसको क्या कहेंगे? कर्म इंद्रियां वश में नहीं हैं. और दूसरा क्या कहेंगे? आसक्ति. इसको कहेंगे आसक्ति. बाप भी शिक्षा तो देते हैं, बच्चे ये नहीं करो. The father gives you teachings बाबा तो सर्जन that है. you mustn't do this because he's the surgeon. दूसरी बात They बाबा write ने to बताई. Baba saying, ज्ञान में हम सब ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थी हैं. तो बाबा we कहते हैं, all are मुझे Brahmins and we are the effort makers, बाबा and Baba मन receives में such संकल्प things बोलता from Baba, from children, saying that, तो Baba, I उसके have लिए many बाबा ने क्या thoughts. शिक्षा दी हुई है? What caution has been given by उसके लिए Baba बाबा for that कहते kind हैं, of thing? खबरदार You have to be very cautious. गंदे Many स्वप्न dirty thoughts will enter मनसा your में minds संकल्प and your dreams, भूत आएंगे. but don't be afraid of them. इनसे डरना नहीं है. सत्युग त्रेता These में ये aspects बातें don't exist in the golden and the silver ages. तुम जितना आगे नजदीक When you होते come nearer to जाएंगे, the silver age, सिल्वर your एज sense तक organs will पहुंचेंगे, stop their तब mischief. कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी. कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी. सत्युग त्रेता Your sense में organs will be वश under में your तो थी. control because in the golden and the जब silver उस ages they were under your त्रेता की control. अवस्था तक आओ, When you reach the तब silver वश aged stage, your sense organs will be under सत्युग your की control. अवस्था में आएंगे, Then when you attain the golden aged stage, you will become Sato Pradhan and your sense organs will be totally controlled. कर्म इंद्रियां वश में थी ना, नई बात थोड़ी है. Baba says your sense organs were under your control. That's not the new thing. Today, कल फिर पुरुषार्थ we are under the influence of the sense कर्म organs, इंद्रियों and को tomorrow वश कर लेते हैं. we have made the वो effort, तो they will be 84 under our जन्मों में influence. उतरते आए. You have been descending for 84 births, and it's now the return journey. You all, बाबा कहते चेक करते रहो. Baba says, just कर्म check इंद्रियां हमको whether is there any mischief? Is my sense organ troubling me? बार बताते हैं Baba ना, just says, always take care of your eyes and ears and your mouth. कर्म इंद्रियों को वश में करना है. You must have that control over your sense organs because this is the time for the return journey. सबको You all have to reach your Sato Pradhan stage. उसके लिए बाबा ने विधि बताई कैसे जाना है. How can you reach? बाबा का जो फेवरेट टॉपिक है कौन सा? This is Baba's favorite topic. You have to check your chart to see how much clarity and how much sin have you accumulated. देखना है चार्ट में कितने पाप किए और कितने पुण्य किए. आज की मुरली का गीत कौन सा था? Sorry, we have to check in our charts how much charity and how much sin have been accumulated. What was the song in today's Murli? Look at your face in the mirror of your heart because the conscience tells us what's the perfect picture. And by having the remembrance of the Father, you will become silver aged from iron aged, and your sense organs will be under control.
you will then feel that there are no longer any खुशी भी storms. रहेगी, ये भी That stage विशेष also बात will है, come. तूफान नहीं आएंगे, ये जो फालतू के विचार आकर के All the बैठ जाते हैं unnecessary मन में, thoughts come तूफान नहीं and आते। disturb you. Such तूफान storms नहीं will आते stop. हैं, तभी तो अवस्था जम जाती है। Then you will be able to तूफान accumulate आते that. रहेंगे, नेगेटिविटी रहेगी, When there are ऊपर नीचे storms, when there is रहेंगे, a अपसेट negativity, होते when there is रहेंगे, that upheaval, when you तो get फिर कर्म upset, इंद्रियां वश में नहीं है। so you will not be able इसलिए to have बाबा that perfect कहते हैं कि बाबा control. को याद करो So तो just आयरन एज remember से the सिल्वर Father एज so तक that you will पहुंच reach जाएंगे, कर्म you will इंद्रियां reach the वश silver हो aged जाएंगी, फिर stage तुमको from the महसूस iron होगा aged stage. Then we will कि अभी realize तो कोई तूफान नहीं आता है। we don't आप get सभी affected by the महसूस करते हैं, storms, or the storms don't even come. कोई तूफान नहीं आता है, अभी तक आता है तो इसका मतलब कर्म इंद्रियां So if still we are affected by the storms, this clearly indicates that my own sense organs aren't under my control. वो अवस्था आएगी, फिर तुम गोल्डन एज में चले जाएंगे। So Baba says that stage also will come when you feel that पावन बनने से there are no more storms in your journey. You will then go to the golden age while making effort to become pure. The Baba's teachings are just incredible. Baba tells you have to make effort, you have to have the constant check over the chart. So if we are not experiencing happiness, then it means that we don't make effort. When you become pure, खुशी का the mercury of happiness will rise. जो भी आते हैं उनको भी समझाओ, Explain to those who come how have they taken 84 births. जिसने 84 However, those who have लिए taken 84 births will understand. कहेंगे अब तो Tell बाबा them, को by याद remembering कर the Father, you will become the मालिक masters. बनना है। If they 84 don't जन्म नहीं understand about समझते 84 हो, births, तो they शायद probably didn't become the क्या masters of the जाएंगे, kingdom. मालिक नहीं बनेंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी We give बात courage सिखाते हैं, and explain good तुम things. नीचे You गिर have पड़ते fallen down. जिसने Those who 84 have taken जन्म 84 लिए births will होंगे, instantly have this उनको awareness. झट स्मृति आएगी। बाबा कहते हैं तुम तो शांति धाम में पवित्र थे, अब फिर तुमको The Father says, शांति You were धाम pure when you were in the land of peace. जाने का I am not showing you the रास्ता path to the lands of peace and happiness. और कोई भी I am now रास्ता showing बता you नहीं the path to the lands of peace and कोई तो happiness. बात पक्की है, No one else can show you the बाबा ही path. है The जो Father बता is the सकता है only one who शांति can धाम show हो, you the path to the land सुख of धाम peace का and रास्ता, बाकी happiness. तो कोई बता ही ना सके। No one else can show you the path. शांति धाम में Only पावन pure souls आत्मा can go जा to the land सकती of peace. जितना खाद निकलती You will जाएगी, remove the rust उतना and ऊंच attain a high पद status according to the मिलेगा, efforts that you और make. जो जितना पुरुषार्थ You can see each one's ये efforts सारी बात किस and पर बाबा बता रहे हैं, हाँ? खाद कैसे निकलेगी, how can you remove the खाद कौन rust? सी है What's आत्मा that में, rust in the soul? अवगुणों की, विकारों The की, devilish traits, the vices, चंचलता की। आज तो बाबा ने कर्म and इंद्रियों की mischief of चंचलता sense की बात organs. की। तो वो बाबा ने कहा ये जो अंदर से खाद है वो कैसे निकलेगी, क्या मेथड बताया What's the बाबा ने? way to remove the alloy in the बाबा soul? कहते कि एक बाबा को याद करो, So Baba says, खाद निकलती you have to जाएगी, remember ऊंच the पद Father and you will मिलेगा, और receive जो a high जितना status पुरुषार्थ and that entirely depends इतना on the ओपन कर efforts दिया that you बाबा ने। make. जितना जिसको पुरुषार्थ करना है करो, How कोई मना much नहीं कर रहा है effort आपको। you wish to जितना make, योग करना you है can करो, do जितनी it. सेवा करनी है How करो, much मना ever तो कोई नहीं। करो बाबा yoga का, you want to जितना do, भी how करो। much ever service हर you एक के want to do, पुरुषार्थ को you तुम तो are देख ही free रहे हो। to do. बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। So you can see each one's efforts, and Baba also gives a great deal of help. And this one is an old child. You have to feel the pulse of everyone. वो तो झट समझ Those who are sensible will immediately understand. This is the unlimited Father, and you will definitely receive the inheritance of heaven from Him. Because we receive the limited inheritance from the physical Father. क्या मिलना चाहिए? Let everyone say, what do you receive from the unlimited Father? सा मिलना चाहिए।
That is the स्वर्ग के inheritance of वर्ष में heaven. 3 कौन सी चीजें हैं? What are the three things which are there? That is happiness, शांति, peace, and खुशी. आप सबके पास है तीनों, सुख, शांति joy. और खुशी. गुण, ज्ञान. Virtues, knowledge, powers. बाबा भी देते हैं ना हमको वर्षा. गुण, The Baba gives the inheritance of the knowledge, virtues, and powers, खुशी आए. because of which we can experience that happiness in our lives. समझ जाएंगे ये तो बेहद का बाप है. So those who are sensible will immediately understand this is the unlimited Father, and you will definitely receive the inheritance of heaven from Him. We did receive it and we no longer have it. So we are receiving it once again. The aim and objective is in front of us. After the Father established heaven, we were the masters of heaven. फिर 84 जन्म ले Then while taking 84 births, we continued to descend. And this is now your final birth. अंतिम जन्म है. हिस्ट्री तो रिपीट होगी. History will repeat itself. सारा 84 Explain the entire cycle of 84 births. जितना समझेंगे The more the number of people who understand, the more the number of leaves that will be created. बाबा ने कहा ना आज देवता कुल की आत्माएं हम सबको अपना झाड़ और आत्माओं को निकालना है. बाबा So we, निकालना है. तो बाबा ने कहा since we belong to the deity clan, so it's our बनते जाएंगे. the responsibility to give the message to all of the other souls and make them belong to Baba. कहेंगे हम आए हैं. You can make many others equal to yourselves. You say, Baba tells this wonderful aspect. You say that we have come to liberate the whole world from the chains of Maya. देखा हुआ है ना माया की जंजीरें. You have seen all the subtle chains of Maya, how much tension, how much stress, how much sorrow, how much peacelessness, how many divorce cases are there, टूट रहे हैं. क्या क्या हो रहा है दुनिया में. how the things are getting divided. जंजीरों से So Baba says, all these are the chains of Maya. बाबा तो कहते We have to liberate the world from this chains of Maya. The Father says, I come to liberate everyone from Ravan. जंजीरों से So सभी all of us have सूक्ष्म में देखना है. have कोई we जंजीर तो नहीं है मोह की, लालच की, liberated लोभ की, ourselves संग्रह from the chains of Maya, that is the greed, the habit of accumulating the things. करते रहो अपने को कि हम किसी जंजीर में तो नहीं बंधे हुए. So we have to check ourselves whether am I caught up in any of these things. Okay, of course we say generally, yes, yeah, I'm fine, I'm happy, but we have to check in a very subtle way whether am I caught up in anything. जंजीरों से, माया की जंजीरों से छुड़ाने. So Baba has come to liberate everyone from Ravan. You children also understand that the Father is the ocean of knowledge. ज्ञान प्राप्त करके मास्टर You receive this knowledge and become master oceans of knowledge. ज्ञान Knowledge is separate from devotion. तुम जानते हो. You now know that only the Father teaches you the ancient Raj Yoga of Bharat. सिखलाते हैं. कोई मनुष्य तो नहीं सिखा. No human being can teach it, but how can we explain this to everyone? यहाँ तो असुरों के Here, many obstacles are created by devils. आगे तो समझते थे शायद कोई Previously, डालता है. we used to believe that they were perhaps throwing rubbish, कैसे but now we understand how they create obstacles. It's nothing new. बाबा कितना लाइट है. Baba, कि विघन तो आते हैं Baba ना, takes it कई very तरह light. की आत्माएं हैं दुनिया में. तो Of बाबा course, कहते such हैं, souls are available, so they always create obstacles. It's nothing new. This happened a cycle ago as well. The entire cycle turns around in your intellects. बाबा हमको Baba is explaining to us the significance of the beginning, middle, and end of the whole cycle. बाबा हमको Baba also gives each one of us the title of a lighthouse. का टाइटल देते हैं.
यहाँ इसका मतलब बाबा बताते हैं एक Baba आंख explains में in what do मुक्ति you mean by धाम that? और दूसरी In one आंख eye, में you have to keep the land of जीवन liberation, मुक्ति। and in the other eye, we शांति have धाम the को land याद of करो। liberation in life, which स्थिरता, means एकदम शांति के प्रकंपन, when we receive सुख। the land of तो peace, दोनों we बाबा ने receive the कहा peaceful तुमको vibrations, शांति and when धाम में जाकर when we फिर सुख remember धाम में that आना land है। of happiness, then we ये तो receive such दुख धाम vibrations. है। You have to बाबा go to the कहते land of कि peace and आंखों then to से the land of जो happiness. कुछ तुम This is the देखते land हो, of sorrow. ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। This is the subtle जो भी आप effort देख रहे हो इस दुनिया required. में, महल, Baba says, गाड़ियाँ, all the चीजें magnificent देखते palaces, हुए all भी such great things which कौन we सी see प्रैक्टिस with our करो physical eyes. भूलने What की। is the effort that you have जो to भी make? कुछ देखते Baba हो says, forget उसको everything that you भूलो see with your physical और eyes. याद किसको करो And what has to be remembered? That शांति is, you धाम have to को याद remember your करो land of peace. आत्मा को अपने बाप Souls को have to याद remember their करो father, and this is known as इसको कहते हैं unadulterated yoga. अव्यभिचारी योग ज्ञान Listen to एक this knowledge से ही सुनना है from only the उसको one. कहते हैं This is known as अव्यभिचारी unadulterated याद knowledge. एक को करो You only have to मेरा remember the तो one. एक Mine is one हाँ, कौन सा and गीत none है other. ये मेरा तो What's एक that song? दूसरा ना कोई It जब is तक one अपने and को none other. आत्मनिश्चय Unless नहीं you have the करेंगे faith that you are a तब तक soul, you are unable एक to की remember याद that आएगी one. नहीं हाँ, ये है फाउंडेशन की This is the बात foundation. The foundation is the आएगी soul नहीं conscious stage. बाबा ने कहा निश्चय करो कि मैं कौन हूँ So you must have faith that you are a soul, a tiny point of light. आत्मा ही तो कहती है Because the मैं soul तो एक says, बाबा की I will बंदी only belong मुझे to one जाना है Baba बाबा because के I, the पास soul, I want to go to ये Baba. शरीर तो अभी This body is पुराना old है and decayed. जड़ Let there be no जड़ी attachment to that. इसमें ममत्व This is नहीं an है aspect of knowledge. ये ज्ञान की बात है ऐसे नहीं कि It शरीर isn't की that, संभाल नहीं doesn't mean करनी that you shouldn't take care of your अंदर body. में समझना है Internally, you must ये understand that this is an पुरानी old खाल skin है which you have to shed. इसको अब छोड़ना है तुम्हारा है Yours is जगत का unlimited सन्यास renunciation. The वो तो जंगल में sannyasis चले go जाते away हैं into the jungle, तुमको तो घर में रह whereas करके you have to live at याद home and करना stay in remembrance. याद में रहते रहते While तुम staying in शरीर remembrance, छोड़ you can leave your body. कहाँ भी हो Wherever you may be, सहज बाबा remember बता the देते Father. हैं, घर में रहो कहाँ भी हो क्या Baba करना says, है irrespective of wherever you एक stay, बाप को you must be in the याद remembrance of the one कहीं भी Father. रहो बाबा ने कहा कोई बंधन नहीं डालता बाबा Baba लेकिन मन doesn't से put दिल any से bondage. बाबा को याद करो We just have to remember याद में Baba. रहते रहते तुम भी If you stay in शरीर remembrance, छोड़ you can सकते leave your body. कहाँ भी रहो Wherever you may बाबा be, को याद remember करो the Father. याद When में you रह stay in के remembrance, spin the cycle of स्वदर्शन self चक्रधारी realization. बनेंगे When you do these तो two things, कहाँ that भी is staying in the रहेंगे remembrance of the ऊंच Father पद and spinning पार the cycle of होंगे the self realization, जितना you can इंडिविजुअल then claim a मेहनत high करेंगे status wherever उतना you may be पद living. पाएंगे The more effort you make घर में individually, the रहते higher तो the status you याद claim. की यात्रा में While रहना staying at home, stay on the अभी pilgrimage of फाइनल remembrance. रिजल्ट में This थोड़ा is a very टाइम little पड़ा time left before ये the नई final दुनिया की result. तैयार चाहिए The new world has अभी to be made ready. कर्मातीत अवस्था If you हो were to जाए attain the karmatit तो stage सूक्ष्म now, वतन में you would have रहकर to stay in the subtle region. सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है And after staying in the आगे subtle region, you चलकर still have to take तुमको birth. सब साक्षात्कार As you progress, you will have visions of all of this. अच्छा के बाद बाबा क्या कहते हैं Acha, मीठे मीठे सिकी लदे to the बच्चों sweetest, प्रति beloved, long lost, and now found children, love, remembrance, and good morning from the mother, father, and Bap Dada. The spiritual father says Namaste to the spiritual children. And we spiritual children also offer love, remembrance, and say good morning, Namaste to the mother, father, and Bap Dada. याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला एक बाप से सुनना है The essence for dharana, the first one, only listen to the one Father, stay in the unadulterated remembrance of the one, take care of your body but don't have attachment to it. लेकिन ममत्व नहीं रखना है दूसरा Second, बाप ने जो follow उपदेश बताई completely all the precautions given by the Father. उपदेश
What's the precaution which is given by कोई the भी father? ऐसा कर्म नहीं करना Don't perform जो any पाप secret की actions जलानी हो, which will dishonor the father, पाप का खाता बने, which will accumulate your sin, अपने को the घाटे account of the sinful में actions, नहीं डालना। which will make you incur loss. वरदान Today's blessing: 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा may you become an embodiment of virtues and experience all virtues by keeping a balance of 3 types of जो service. बच्चे संकल्प बोल हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। The children तीनों में मार्क्स who remain समान constantly busy doing service with their every सारे thought, दिन में तीनों word, सेवाओं and का act, बैलेंस they हो, become the embodiments of तो success. पास with honor When they have equal marks in all the 3, they keep a balance of all the 3 throughout the day. उनके द्वारा They will सब then दिव्य pass with गुणों का honors and श्रृंगार become the embodiments स्पष्ट of दिखाई virtues. देता है। The beautiful decoration एक of all the दूसरे को divine बाप के virtues will be गुणों का clearly visible in और them. स्वयं की धारणे के To गुणों give one का another cooperation with संयोग Father's देखना virtues and the ही virtues that you have गुण imbibed मूर्त बनना is है। to become the ये embodiment अच्छी of बात बाबा ने virtues. बताई। हाँ, कौन सी? एक दूसरे को बाप के गुणों का व We स्वयं have to की cooperate with धारणा others with के the गुणों Father's का virtues and सहयोग the virtues देना that you ही have imbibed. गुण मूर्त It's to बनना है। become an embodiment of क्योंकि virtues because the गुण donation दान of the virtue is सबसे the बड़ा greatest दान। donation. स्लोगन Slogan: निश्चय रूपी when your फाउंडेशन foundation पक्का of है faith is तो strong, you श्रेष्ठ जीवन automatically का experience an अनुभव elevated स्वतः life. होता है। अव्यक्त इशारे Today's object signal: अब संपन्न व कर्मातीत now have the होने की deep धुन consent to become लगाओ। complete and karmatit. पिछले कर्मों का As a हिसाब result of the किताब karmic के account of your past actions, फलस्वरूप you तन can का have an रोग illness हो, of the body or some मन conflict के of the संस्कार sanskars with the sanskars of अन्य others. आत्माओं के संस्कार टक्कर भी खाते हों लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश To become न karmatit, होकर don't be influenced by the मालिक suffering बन of the karma, हिसाब but settle किताब your accounts as a master. उपकरणी। कर्म योगी To बन settle the suffering कर्म of karma by being a karma होना, yogi is a sign of becoming ये है karmatit. कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस Practice करो being a अभी karma अभी yogi one कर्म moment and योगी having the अभी karmatit अभी stage the next. कर्मातीत स्टेज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, कुछ डायरेक्शन है और 3 मिनट योग करके भी जाएंगे। हमारे आदरणीय रामश्लोक भाई जी भी आज आपको बहुत अच्छी भट्ठी के विषय में बताएंगे और हमारा बाबा भी वंडरफुल, बाबा की मुरली भी वंडरफुल। Baba is wonderful and Murli is also wonderful and Rajni's sister is also wonderful. बहुत बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने सुनाई, जो दिल में Sister उतर has गई। explained तो दीदी the का Murli very well. बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद दीदी आपको। आज डायमंड हॉल की दिनचर्या इस प्रकार से होगी। So today's Diamond Hall 10 program से goes like 10:30 this: योग होगा, 10 to 10:30 से 10:30 a.m. 11:30 Yog, आदरणीय 10:30 to 11:30 रजनी a.m. दीदी क्लास there is a class कराएंगे। by Rajni's क्लास का sister, टॉपिक है and the topic is अंतिम समय की तैयारी। the 11:30 preparation से of the 12:30 final आदरणीय moment, सविता दीदी क्लास and 11:30 to 12:30, क्लास का टॉपिक है and class is taken by संपूर्ण Dr. Savita पवित्रता sister, का पुरुषार्थ। and the topic is the शाम को effort for that complete 5 से pure stage. 5:30 योग होगा, And evening 5 to 5:30 से 5:30 6:30 p.m. there is yoga, आदरणीय and 5:30 to सुदेश दीदी की 6:30 क्लास p.m. the कराएंगे। class by ज्ञान respected Sudesh सरोवर Didi ji, क्लास का टॉपिक है and the अशरीरी topic is अव्यक्त स्थिति। the bodiless and the avyakt 6:30 stage. से 7:30 आदरणीय And सुषमा 6:30 to दीदी क्लास 7:30 p.m. कराएंगे। the class by क्लास का टॉपिक Sushma है Didi ji, प्रवृत्ति में रहते and the class निरुद्ध is कैसे बने। how can you फिर be detached 7:30 while living से at 8 home, स्पेशल योग होगा। and 7:30 to 8 p.m. there is yoga. भोपाल एवं अन्य सभी स्थानों से आई हुई टीचर्स बहनें
एवं अकाउंट्स लिखने वाले All the सारे sisters भाई and बहनें teachers who have आज come शाम from 6 बजे कॉन्फ्रेंस Bhopal हॉल में and Indore पहुंचे। zone are आप requested to सभी just भी reach अकाउंट्स conference कानून hall. से संबंधित There बहुत is महत्वपूर्ण क्लास there is आदरणीय an सीए important ललित class. भाई जी कराएंगे। The अतः class will be सभी taken टीचर्स by बहनें Lalit brother. शाम 6 बजे से पहले अवश्य पहुँचे। जिन भी भाई बहनों को ललित भाई से कारोबार के संबंधित मिलना हो, All the वे sisters आज who would like to सवेरे 9 बजे महादानी meet Lalit कॉटेज में brother, मिल you सकते can हैं। just go and meet सभी him at टीचर्स 9 बहनें a.m. at एवं Mahadani अकाउंट्स cottage. लिखने वाली सभी बहनें एवं भाई All the कृपया teachers, ध्यान brothers दें। and the sisters who अकाउंट्स are handling चेकिंग accounts, फॉर्म अकाउंट्स ऑफिस सेकंड नंबर फ्लोर पर जमा करें। you are requested to आज का deposit all the जनरल forms योग on second floor दादी जी of मीटिंग account हॉल office, में होगा। and the evening आज meditation from 6 ट्रामा to 8 p.m. सेंटर is at Dadiji's ब्लड meeting बैंक hall. में ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है। सुबह There 9 is a blood बजे से donation 5 camp बजे at तक Trauma Center. जिन भी भाई बहनों को It starts at ब्लड 9 a.m. डोनेशन करना है, Whoever is वह willing 9 to बजे donate, से 5 बजे तक दे you सकते can हैं। donate your ट्रामा blood today सेंटर जाने from के 9 लिए गेट नंबर during this 1 timing, that is 9 to से 5 p.m. हर घंटे गाड़ी मिलेगी। बस 9 बजे, 10, 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मिलेगी। आपके लिए खुशखबरी है कि योग की भिन्न भिन्न स्थिति की अनुभूति करने के We लिए are pleased to say that मेडिटेशन कमेंट्री तथा शिव संदेश का पॉकेट बुक बनाया गया है। Pocket book of Shiv Sandesh and Raj Yoga commentaries have been पत्रिका प्राप्त made, करने, and in नए order to वर्ष get 2026 this का benefit, कैलेंडर प्राप्त करने के लिए ओम along शांति with मीडिया ऑफिस taking the calendars आनंद of भवन the year एवं ओम शांति मीडिया 2026, काउंटर एवर हेल्दी के सामने you से can प्राप्त either visit Anand सभी Bhavan's भाई office, बहनें or there is a ध्यान counter रखें, in front of the कम Ever से Healthy कम Hospital. पानी यूज करें। आते जाते बाथरूम के नल को बंद करके निकले। रूम से आते समय रूम के लाइट अवश्य बंद करके निकले। शिव आमंत्रण मासिक समाचार पत्र के नए मेंबरशिप रिन्यूअल और If anyone wants to 2026 के subscribe the Shiv कृपया Amantrak, that डायमंड is the हॉल magazine, गेट नंबर 0 के सामने शिव आमंत्रण ऑफिस में संपर्क you करें। can just visit that Shiv बाबा मिलन Amantran के office. बाद जो भी भाई बहनें All the sisters and brothers who would like to stay here at Madhuban for a duration of 15 days to 1 month, you can just visit the Shanti Kunj once Sevadar office. एक माता का पर्स मिस हो गया है, जिसे भी मिले खोया पाया विभाग में जमा करें। जिन भी भाई बहनों को सामान मिलता है, मोबाइल, पर्स, कैश अपने पास नहीं रखेंगे, तुरंत जमा करें। भाइयों की तरफ 0 नंबर गेट के सामने खोया पाया विभाग है, वहां जमा करें। कृपया सभी टीचर्स बहनें ध्यान दें। आज सुबह 9 बजे ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 3 में ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला चलाने वाले Those who take care of the Brahma Kumaris Gita Pathshalas, केयर टेकर ट्रेनिंग का चैप्टर their training नंबर 1 रखा गया है। is at hall number 3. सभी टीचर्स बहनें अपने पाठशाला संचालकों को अवश्य इस ट्रेनिंग में अपने साथ लेकर आए। ओम शांति। अभी राम श्लोक भाई विशेष Om Shanti, we have Ram Shlok brother. अब इनका ओम शांति, अब इनका पूरा हो गया, अब तो माल रहा ही नहीं। अब आपकी काम की चीज क्या? The thing which is of use to you, that is, आज रात्रि and that is only your income. मोबाइल वाला नहीं, बुद्धि की बैटरी रात्रि It's not about charging the mobile's battery, but the battery of the soul. तपस्या जो आप जानते हैं। So you know, भोपाल जोन,
इंदौर जोन, उसके साथ पंजाब जोन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल, साथ साथ जो भी भाई बहनें आए all the sisters and brothers who have come from various states. तो इसी हॉल में होगा। पूछते कहाँ So होगा? इसी your में 2 meditation प्रयास will be at Diamond 4 Hall. बजे तक 2 घंटा ज्वालामुखी तपस्या सब भस्म कर दीजिए। You should burn all the traces of all those limited sanskars. Can all those who would wish to attend that, can you raise your hands? 5000 साल के बाद सजनिया, The bridegroom ये has साजन जो come लौकिक after होता है ना, 5,000 फाड़ फाड़ के years. देखती रहती है। अजी कब आओगे जी, ऑफिस से जल्दी आ जाना, झूठ बोल For देते हैं। instance, in the world, we are always concerned about तो सोए हुए हूँ, जग जाएं। when their spouse comes, सजनी फिर ये चांस नहीं मिलेगा। the wife always waits. So in the same way, Baba has come after 5,000 years. We should have a lot of concern for स्टोर him. और प्ले स्टोर जी, मल्टीमीडिया 3 ऐप का नाम है मल्टीमीडिया 3। विशेष जो है Those who don't have, टीवी चैनल वाले को मालूम होगा, हम इसका हम तो those who can't make it happen to be available at Diamond Hall, you can also इस पर देखेंगे तो visit it on नहीं app. भी देख सकते हैं 2 बजे से, और अपना बैठ करके सारे देश विदेश में ये सब करते हैं सारा। तो आप लोग का विशेष निमंत्रण है, वेलकम फॉर तपस्या। So we invite you for tapasya, because when you are in tapasya, that you will bid farewell to many obstacles. Baba tells many times, make your soul conscious stage and always change your attitude, your drishti, your vision of seeing. Let's remember Baba for 2 minutes. मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही,
Let's listen to the teachings of respected Dadi Prakash Mani ji. अब ये पूरी की सारी ही souls Now all these souls, जो the इतना entire बड़ा huge झाड़ है, tree of सब souls souls will gather at their home, आएंगे will तभी fly and सब यूं उड़ के move चलेंगे in उसी that same world. शरीर नहीं जाएंगे The bodies will not go. इसलिए शरीरों के लिए ये विनाश That's की why the दुनिया है preparation for और souls destruction को is meant ऊपर for this जाना है world. The souls will have to go upwards. लेकिन उन souls के To make the souls pure pure, बनाने Baba के teaches us the लिए meditation. ये meditations बाबा सिखाते हैं इससे soul Through it, a soul that has become impure will become pure again. तो प्योर होने से By becoming pure, बहुत one crosses over with a great love and ease. Om Shanti.